Yes, actually, the support I got from my family was very special for me because MSc हो गया है, उसके बाद कोविड है, कब एग्जाम होगा कुछ भी मालूम नहीं होगा, भी वो उसमें भी क्वालिफाई होगा या उसमें भी पता नहीं. And last year, ma'am, you know that I got selected for BARC Ph.D. in last year only. But since I was not having any qualifications like NET, LS or JRF, I did not join that institute. So उसका भी डर था कि मैंने उतना अच्छा इंस्टीट्यूट तो छोड़ दिया, क्या आगे जाके मैं क्वालिफाई कर पाऊंगी. So my mother always supported me very much. उन्होंने कहा कि जो होगा, अगर इस बार भी नहीं निकला तुम नेक्स्ट टाइम ट्राई करना. तो दैट से एक्चुअली बूस्टेड मी दैट ठीक है, कोई तो मेरा साथ है. हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस न्यू एपिसोड ऑफ सफलता सीरीज. आज के इस एपिसोड में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एज वेल एज स्पेशल गेस्ट को इनवाइट करने वाले हैं जिन्होंने मल्टीपल एग्जाम्स क्लियर किए हैं, जैसे कि हो गया CSIR नेट, गेट, ACTR एग्जाम, WBSET. इसके अलावा उन्होंने IIT जाम क्लियर किया है, BRC एग्जाम, TIFR एग्जाम एंड और भी बहुत सारे एग्जाम. इन्होंने मल्टीपल इंस्टीट्यूट्स में इंटरव्यू दिए हैं, साथ ही साथ बहुत सारे इंटरव्यू में इनका सिलेक्शन भी हुआ है. फिलहाल की बात करें तो शी इज परसुइंग हर PhD फ्रॉम CSIR IICT हैदराबाद, मेनली इन नैनो टेक्नोलॉजी यूनिट. सो एवरीवन, लेट्स वेलकम प्रोमा नाग चौधरी. आज हम इनसे जो है इनके जर्नी के बारे में जानेंगे, एज वेल एज देखेंगे कि उन्होंने इतने सारे मल्टीपल एग्जाम को कैसे एक साथ हैंडल किया और उनके सक्सेस का क्या की पॉइंट रहा है. सो लेट्स वेलकम हर, प्रोमा नाग. Very warm welcome, Proma, to this new episode of Safalta series. How are you? I'm good, ma'am. Okay. So, Proma, मैं सबसे पहले चाहूंगी कि आप अपने दोस्तों को अपने बारे में बताएं. आप कौन से बैकग्राउंड से आती हैं, आपका दैट इज कॉलेज कहाँ से हुआ है, क्या क्या आपने कोर्सेस लिए, and साथ ही साथ what different exam you have cleared and what is the current status like. अभी आप currently जो है क्या कर रही हैं? Yes, ma'am. I am Proma. I belong to Kolkata, West Bengal. I have done BSc in botany and thereafter I pursued my MSc in botany from Baligan Science College, University of Calcutta. I have cleared multiple national examinations including CSIR-NET June 2021 with an All India rank 108, and I have also cleared GATE Excel 2 times, 2020 and 21. I have cleared TIFR GS 2022, ACREC JRF 2022, West Bengal SET 2020, and BARC OCS 2021. Okay. And currently आप क्या कर रही हैं? Yes, ma'am. Currently doing PhD from CSIR Indian Institute of Chemical Technology. Okay, great. आपकी क्वालिफिकेशन को देखते हुए सबसे पहले जो मेरे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है, और ऐसे क्वेश्चन जो है बहुत सारे स्टूडेंट्स ने भी आपसे पूछा है, इतने सारे एग्जाम की तैयारी और एक साथ मतलब कैसे किया आपने? I think different strategy. Actually, I followed the basic syllabus of CSIR-NET only, and for any of the examinations, what we have to do is we have to analyze the syllabus first. So syllabus is mostly common like biochemistry, molecular biology, cell biology, genetics, and techniques, and little bit of plant physiology and developmental biology. These I ask. Now you have to. Now what I did was that I used to prepare the PYQ. I used to analyze the question paper from which part they are focusing. Like for TIFR, they also ask physics and chemistry. Chemistry is moreover biology related. That is a biochemistry portion. To focus on that. And apart from this, ACREC is similar to CSIR-NET. They have part B and part C type questions, 4 marks. So part C is they frame their own question. But part B is mostly I got from CSIR-NET PY.
And all these exams I have cleared with the same strategy that I followed for CSIR. ओके ओके ग्रेट। तो एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट की लाइफ में कि जब भी वो मल्टीपल एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करते हैं तो देर इज वन वेरी कॉमन थिंग दैट इज कॉल्ड द मोटिवेशन। इतने सारे एग्जाम को एक साथ तैयार करने के लिए एक बहुत ज्यादा कहते हैं ना एक स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है। तो देर इज वन स्टूडेंट हु इज आस्किंग यू कि इतने सारे एग्जाम की तैयारी आपने एक साथ की, मोटिवेशन कहाँ से मिलता था आपको इसके लिए? मोटिवेशन मैम और सर से ही मिली है। जब भी मैं डाउन होती थी, मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता था, मैं क्लास उससे मेरा रिवीजन भी हो जाता और मेरा मतलब आई यूज्ड टू रिकॉल द थिंग एंड there's nothing, I did not watch any motivation videos or like that. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्या आपने इतने सारे एग्जाम जब क्लियर किए हैं तो क्या आपने हर एक एग्जाम के लिए अलग अलग कोचिंग ली थी या कुछ अलग से स्पेशल स्ट्रैटेजी फॉलो की थी? नहीं, कोचिंग तो आई यूज्ड टू फॉलो अन अकेडमी ओनली, बट व्हाट आई डिड वाज आई एनालाइज द सिलेबस। तो उसमें से जो जो पोर्शंस कॉमन है लाइक बायोकेमिस्ट्री, सेल बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जेनेटिक्स, टेक्निक्स and sometimes plant physiology, but they do not generally ask much except BARC. So I used to read these topics multiple times and I used to analyze the question paper. So which portion they are focusing. Some institutes focus more on molecular biology, like ACTRIC-JRF. ACTRIC is mainly for cancer research, so they focus on cell biology and cancer itself. So they ask more questions from that portion only. So I prepared that portion very clearly. And since ACTRIC and BRC do not provide previous year question papers, I used to ask my seniors who have written this exam, and they told me that there's nothing new except they asked more about cell biology, cancer biology. And for BRC, I followed ma'am's lecture only, that you need to read the question fast and do the question properly. So this is all I follow. ओके ओके ओके। एक काफी अच्छा क्वेश्चन पूछा है एक स्टूडेंट ने। उनका कहना है कि डिड यू एवर फील वेरी एग्जॉस्टेड व्हाइल योर प्रिपरेशन प्रोसेस? No, actually, I did. In the beginning, I was very excited, but as time passed by due to COVID-19, from the CSR, and there was no notification. So it was like a monotonous life, that preparing again and revising again and again, but there is no notification of the exam. So a little bit exhausted at that time, we all felt. So my fellow friends will also understand this. But yes, I used to motivate myself and I feel confident that yes, I will be able to crack the exam. Okay, finally you did it with so many different exams. Okay. अगला सवाल है, क्योंकि आपके पास बहुत सारे एग्जाम का क्वालिफिकेशन है, सो आपने इतने सारे डिफरेंट एग्जाम में, जैसे कि एज पर माई नॉलेज 70 to 80% सिलेबस लगभग सारे एग्जाम का सिमिलर रहता है एज कम्पेयर टू CSIR। सिमिलरली रहता है। यस, बट वो जो डिफरेंस था सिलेबस में, हाउ यू हैंडल दैट? Syllabus, like I said, some institutes prefer questions from some topics more. Like for ACTRIC, they focused more on cell biology, molecular biology, and techniques. So what I did not attend all the questions. Questions I was confident enough that only I attempted, and I avoided the negative marks in each and every exam. Least negative marks leads to you more chance for qualifying. ओके, यस, ये तो है कि आप स्कोर कर रहे हैं तो दूसरी तरफ से आपको नेगेटिव भी बचाना होता है, अदरवाइज यू विल गिव व्हाटएवर यू हैव। मैं पूरा क्वेश्चन कभी नहीं, तो आई वाज जस्ट लुकिंग एट माय फेलो फ्रेंड्स हु वाज सिटिंग ऑन just beside myself. He attempted all 50 over 50 questions, but I attempted only 41. So I was like, okay, let's see what happens. Okay. Yes, ma'am. So one interesting question is there कि what subject you have covered for your GATE Excel exam and what was the source of that preparation? Yes, actually for GATE, I did not join any coaching.
I was pursuing my MSc, so MSc pressure was always there. And GATE, from GATE, what we have to do, we have to choose 2 subjects in the life sciences section. So that I chose botany, since I was from botany background. Lot of similarities were there in the syllabus. And another subject I prepared was microbiology. There is one book called Pocket Microbiology. It's very small, but it has got all of the important ma'am must know. Yes, that has got important points. So I revised that and I did PYQs. GATE focuses more on the numerical portions that I actually practiced, the lot of formulas and all, and the rest I followed variants or e-learnum, GATE preparation, YouTube, whatever the free videos were there. I followed that and I practiced from that also. Okay, great. फाइन, तो ये कुछ सवाल थे जो आपके प्रिपरेशन से रिलेटेड थे, मतलब जो बहुत जनरल सवाल होते हैं. नाउ लेट्स कम टू दोज काइंड ऑफ क्वेश्चन जो कि आपके इंटरव्यू से रिलेटेड है, जो कि आपके स्पेसिफिक एग्जाम से रिलेटेड है, क्योंकि आपने कुछ बहुत यूनिक टाइप के एग्जाम भी क्लियर किए हैं. जहां तक मेरा कैलकुलेशन कहता है, आई कांट सी लाइक 1 से 2 एग्जाम को अगर मैं हटा दूं तो आपने लगभग सारे एग्जाम क्लियर कर रखे हैं. सो वी आर हैविंग सो मेनी क्वेश्चन फॉर यू, वन बाय वन वो हम आपके सामने पुट ऑन करेंगे एंड देन वी विल नो कि आपका क्या स्ट्रैटेजी रहा है उसके लिए. So one very basic question is there. What kind of question you have faced during your interviews? Like whether the level was very basic, advanced, or it was like, very parallel to what kind of research is currently going on in the field? For some institutes, what I felt, they ask basic only, but they check how much you can think. The answer you do not know. Okay, and they always give hints, and the way you proceed to say your answer, that leads to your that leads to your selection in the interview actually. So once you say, the panel member will again say, okay, think like that. Then then after thinking, I said something. So this way, it was a great interaction actually, moreover interview. And some interviews, it was not so like they asked like little bit weird type of questions, which I faced, but only 1 or 2 institutes that actually. And moreover, they asked about the techniques. So if anyone is having the practical knowledge of handling the techniques like Western blot they have performed in the during the MSc course or something like that, so that actually helps a lot, because you're gaining the practical knowledge in that. So they ask lot of techniques. Okay, इसी से जुड़ा हुआ एक और सवाल है कि जैसे अभी आपने कहा टेक्निक्स, तो अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसने कभी लाइफ में लैब एक्सपीरियंस नहीं किया है, लाइक देयर आर सो मेनी डिफरेंट बैचेस मेनली ड्यूरिंग द कोविड-19, उनको तो कभी लैब देखने का मौका ही नहीं मिला. सो आपको क्या लगता है कि क्या उन बच्चों को ड्रॉबैक फेस करना पड़ेगा जिनका लैब एक्सपीरियंस नहीं है, स्पेशली ड्यूरिंग द इंटरव्यू? ड्रॉबैक तो नहीं है. What they can do is they can see a lot of YouTube videos that are already available. From that they can gain the knowledge and read the techniques properly. हाँ, और उसके बाद क्या हो सकता है, किसी सीनियर से भी डिस्कस कर सकते हैं. And what is their application? Why we are doing this technique? That is most important. That is, they must know, because after MSc you have to work on your own only. So no one, seniors will of course guide you, but you have to be independent. So what are the plans, what are the techniques you will do, what type of study you want to do, why do you want to do, that needs to be clear actually. Okay, चलिए, तो होपफुली ऐसे स्टूडेंट जिनका मेनली एक्सपीरियंस नहीं है, दे हैव गॉट द आंसर दैट इट्स टोटली आई थिंक कंडीशन बेस्ड, राइट? कभी आपका एक्सपीरियंस ना होना आपको ड्रॉबैक भी दे देता है और कभी ड्रॉबैक नहीं भी देता है. इट्स ऑल अबाउट कि आपने इंटरव्यूअर का जो ध्यान है वो कहाँ पे करवा के रखा है. अगर आप कोई भी आंसर नहीं देंगे तो ऑब्वियसली दे विल फोकस ऑन दोज काइंड ऑफ एरिया जहां माइट भी उनको फोकस भी नहीं करना चाहिए. ओके. मेरे काफी फ्रेंड्स है जिसका एक्चुअली कोई लैब एक्सपीरियंस नहीं है, तो दे गॉट सिलेक्टेड इन वेरी great institution, so that doesn't matter. Even मेरे dissertation भी 3 months was, after working for 7 months it was closed. From March 2020 it was totally closed. So I gave half presentation on what work I have already previously done. That exposure was not there.
during my MSc. So I learned a lot from YouTube videos, and whatever I watched, I read the techniques. So Okay. आपसे बात करके मुझे ऐसा लग रहा है कि you are that kind of student who is like कि हम कुछ भी करने को रेडी हैं, बस हमको नॉलेज गेन करना है, राइट? बिकॉज आई yes, ma'am. आई रियरली हैव हर्ड फ्रॉम एनी काइंड ऑफ स्टूडेंट कि मैम लैब एक्सपीरियंस के लिए भी हम यूट्यूब वीडियोस देख सकते हैं. मतलब आई थिंक यू आर द फर्स्ट स्टूडेंट्स फ्रॉम whom जो है मैं ये बात सुन रही हूँ कि लैब एक्सपीरियंस के लिए भी यूट्यूब वीडियो प्रेफर किए जा सकते हैं. दैट मीन्स यू हैव एक्चुअली एक्सप्लोर्ड सो मेनी थिंग्स इन सर्च ऑफ मेनी different kind of experience. So I think that is a plus point for your Yes, preparation. because during my masters, I did lot of techniques like SDS based that we all did. But actually, what happened in the colleges wherever my friends did MSc, there was not very exposure. So what they used to do, they also used to watch the videos, and from there I got that yes, we can like this, we can do cell culture, and before coming to this research area, actually my research area is different from what I have studied in the past. So a lot of scientists actually asked me this question, that why nanotechnology you are preferring. So what gave you interest in nanotechnology? Actually, after CSIR, actually I read lot of papers regarding nanotechnology, and it fascinated me to pursue this type of research. And whatever they asked, they were also surprised that I know so many things about nanotechnology. I'm not from chemistry background or biotechnology background. ओके तो चलिए आपके इसी एक्सपीरियंस से एक और सवाल बनाते हैं. स्पेशली ये सवाल मेरे इंटरेस्ट का है कि जैसे आपने कहा आपका बैकग्राउंड बॉटनी से रहा है, प्लांट से रहा है, बट अभी जिस फील्ड में आप काम कर रही हैं दैट इज कम्प्लीटली डिफरेंट. तो इज इट एक्साइटिंग और इट इज समथिंग कि रोज आपको कुछ नया जानने को मिल रहा है, और इट इज समहाउ काइंड ऑफ फ्रस्ट्रेटिंग कि मतलब गलती कर दी या फिर यू आर मैनेजिंग एवरीथिंग? मतलब व्हाट इज द करेंट एक्सपीरियंस ऑफ योर्स? Actually, this question was asked by a lot of scientists whom I contacted. So they said that do not change your field, because after some time you might lose that energy or something. But actually, I'm enjoying, because I'm learning a lot of new things from this field. And actually, interdisciplinary research is the future. Not because I'm from botany. Even we can do some synthesis from botany, plant material also. We can synthesize some nanoparticles from the natural sources, which could be useful in the medical research, biomedical engineering or tissue engineering. We can utilize that thing. So I'm getting a lot of new knowledge here. ओके तो चलिए हमारे आपके दोस्तों के लिए एक बार क्लैरिफाई करके बता दीजिए कि करंटली यू आर वर्किंग इन विच फील्ड एज वेल एज, अगर प्रॉब्लम ना हो तो कैन यू शेयर ऑन व्हाट टॉपिक और व्हाट रिसर्च टॉपिक यू आर परसुइंग योर पीएचडी? Yes, ma'am. Actually, I am pursuing my PhD in the nanotechnology and nanomedicine discipline from the CSIR Indian Institute of Chemical Technology. And my research is actually, I was very interested to work on cancer research, but I'm working on cancer nanotechnology, and as well as I'm working on angiogenesis and the application of angiogenesis in therapeutic applications. Okay, that sounds great actually. Yes, this is actually a new field for treatment of cardiovascular and ischemic diseases. Angiogenesis plays an important role. So we synthesize the nanoparticles, that is a chemistry portion, and then we characterize them, and then we do the in vitro and in vivo studies. Okay, okay. अच्छा, एक आई थिंक ये सवाल जो है थोड़ा क्यूरियोसिटी के कारण आया होगा. एक स्टूडेंट का ही एक क्वेश्चन था, काफी बड़ा क्वेश्चन था. आई हैव रेड एंड जस्ट सम अप द मीनिंग ऑफ दैट कि क्या आप जब इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो वहां पे जाकर ये बताना कंपल्शन होता है कि आपका रिसर्च एरिया क्या है, और क्या उसी रिसर्च एरिया के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आपको आगे चल के वो फील्ड मिलती है या स्विच करना पड़ता है? तो ये कितना मैंडेटरी है कि आपके पास एक विजन हो कि आप आगे चल के क्या रिसर्च करने वाले हैं या किस में इंटरेस्ट रखते हैं? एक्चुअली रिसर्च टॉपिक तो खुद का ही जो होता है, जो जिसमें मुझे 5 साल काम करना है, या आफ्टर दैट आल्सो आई वांट टू वर्क ऑन दैट ओनली, तो वो एक रिसर्च इंटरेस्ट होता है. And what I did was I actually searched for the institutes which provided which actually
had work going on similar with my research interests. So I gave interviews over there, and usi se, and they asked, the panel member asked, what is your research interest? And when you say, when we say that our research interest is this, then they ask questions from that area. Great. Sometime like you have got a very weird kind of experience, and of course that experience has been given by the students only. जैसे अभी 2-4 दिन पहले की बात बताऊं, आई जस्ट रिसीव्ड अ मेल कि मैम मुझे बता दीजिए कि मैं क्या रिसर्च एरिया या रिसर्च टॉपिक चूज करूं, बिकॉज मेरे बहुत से इंटरव्यू स्टार्ट होने वाले हैं. तो even I get this type of messages. I mean, is it someone else who can help us in deciding that, or it should be only you that who will be deciding कि yes मुझे आगे किस फील्ड में करियर परस्यू करना है या किस टाइप के टॉपिक को I should choose? Mentioned earlier, that is up to you, whichever topic you want to work. Not only that, after your PhD also, when you're pursuing postdoc or something else, so that should be kept in mind, because we can do interdisciplinary research is linked, but the topic I should choose is my interest, because I am working on that. And what we can do, we can take suggestions from the seniors who are working on the same discipline, that how they are working, and that is all. That is all we need to focus actually. Okay. एक हमारे बड़े रेगुलर स्टूडेंट है, उनका एक क्वेश्चन था कि व्हाई IICT ओवर CCMB? CCMB is also very good institutions, and for IICT actually there is no advertisement, so many people don't know that there is a biological sciences department working over here. And why I chose CCMB over IICT was my research interest only. That was actually, I thought a lot. I was a little bit confused also. But my seniors also told me that whatever your research interest you are having, if that is, because research interest is more prior than your institute name, the institute tag that you are gaining. So that is one of the reasons why I left CCMB. Another one is that CCMB actually have lab rotation. So you have to work on 4 labs. Then afterwards, with the mutual decision of the guide and the student, we get the lab. So sometimes it may happen that I am not interested to work on this, but I have to work on this because I got this lab. So this is another reason why I left CCM. And another thing, facility IICT, since both of our campuses are same, IICT and CCMB, so we can procure any facilities from CCMB, and also CCMB can procure any facilities from IICT. So this is one of the greatest advantage over here. Okay. फाइन. एक और क्वेश्चन है जो काफी ज्यादा मतलब सबसे ज्यादा डिमांड में रहा है कि कैन यू शेयर योर स्ट्रैटेजी फॉर BARC एग्जाम प्रिपरेशन, बिकॉज सभी को पता है कि आपने उसका रिटर्न भी निकाला, आई मीन टू से जो MCQ एग्जाम होता है वो भी निकाला, और आपका PhD का भी एक्सपीरियंस रहा है BARC में. तो क्या आप अपनी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी शेयर कर सकती हैं इन शॉर्ट, कि अगर जो फ्यूचर में जो बच्चे तैयारी करने वाले हैं BARC एग्जाम के लिए, वो उनको मतलब एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी क्या फॉलो करनी चाहिए? स्मार्ट स्ट्रेटेजी यही है कि वो 6 यूनिट्स आपको बहुत अच्छी तरह से पढ़ना है. Biochemistry, cell biology, molecular biology, and cell signaling. Little bit they ask about developmental biology. I think 2 or 3 questions were only there. Plant, they focus a lot, and this time when I gave the exam, they focused on diversity also. And another one is techniques. And another one is like when we are attempting the paper, BARC has lot of questions, but we do not need to attempt all of them. The questions are not like part C also, not by like part B also. It is intermediate between the two, and so it takes a little bit time to read the questions. And what they used to do is they trick the last sentence of the question, that actually whichever answer the student is thinking, actually if they just miss that last line, the answer is changing totally. So that leads to negative marking actually. So they do a lot of questions I've seen. They have just tricked the questions. So this is one of the thing. And for interview, BARC PhD is something different, and OCS interview is completely different, what I felt.
For PhD, they ask basics only, like other institutes, like of the other institutes, how they focus is uh, cell biology, molecular biology techniques, and your research interest. From there only they will ask. But for OCS, what I faced was, and it taught me a lot, that you need to have certain sort of practical experience before coming for the OCS interview. They ask a lot of application-based questions. Next Time question. management is one another thing. We need to manage that time actually. Okay. एंड अगेन जैसे आपने टाइफर एग्जाम भी क्लियर किया है तो स्टूडेंट ये भी जानना चाहते हैं कि व्हाट वाज योर प्रिपरेशन स्ट्रेटजी फॉर टाइफर एग्जाम बिकॉज उस एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा डिफरेंट काइंड ऑफ माइंड सेटअप होता है स्टूडेंट के बीच में कि माइट बी बायोलॉजिकल साइंस के स्टूडेंट टाइफर एग्जाम इतनी आसानी से क्लियर नहीं कर सकते हैं सो व्हाट यू वांट टू सजेस्ट ऑन दैट It's not like that actually. TIFR has got different types of sections actually: physics, chemistry, general aptitude, and biology. So if you're pro in biology, you will score definitely more in biology. And physics, I attempted very less questions. And chemistry I did, and general aptitude also I did. And cutoff for TIFR is very low because they all know that actually we are more focused over biology than physics. And again, going to 11-12 syllabus and reading all those is little bit difficult. So whatever you can do, whatever you remembered some formula from the 11-12, that actually helped me to get selected in TIFR written. ओके ग्रेट एंड इसके अलावा आपने WBSET एग्जाम भी क्लियर किया है तो व्हाट वाज द एक्सपीरियंस ऑफ दैट And WBSET is easy because they do not have generally negative marking. They don't have. And part B is it have got two papers. First is the general teaching portion and with general aptitude. So that is we need to score minimum 50% in both the papers. So biology, everyone can do it. And for the first paper, actually I went through the PYQs of West Bengal set. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके इंटरव्यू पे क्योंकि आपने बहुत सारे इंस्टीट्यूट का इंटरव्यू जो है अटेंड किया है काफी सारे इंस्टीट्यूट का आपने इंटरव्यू क्रैक भी किया है what was your preparation strategy how you just made yourself ready as well as updated for the interview round Yes, actually इंटरव्यू पहले पहले तो समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे क्या पढ़े वो तो समझ में नहीं आ रहा था क्या एक्स्ट्रा पढ़ना है because all of us are JRF qualified and from that they will select particular student. So कुछ तो different करना है from the rest so that I can get selected. This is the motto I followed. And then actually I asked my seniors who gave particular institutes interview. And from there I got some knowledge that we need to focus more on techniques, biochemistry, little maths they also ask, like oral maths they ask sometimes, and that's all. But they ask application based questions. The answer I don't know, they will try to ask that only. Now how much I can think and answer, that is the main strategy. And if I keep quiet, then they will not select. So you have to say something, बोलते रहना है, और that will lead to your selection. चाहे वो गलत भी हो, लेकिन गलत नहीं बोलना, गलत भी एक negative impact डालता है. So whatever you're thinking, if you're not sure, also say like this, that maybe this will happen. Like that I said, and then they helped with the answer. Okay, now you say like this. So this was the strategy. Okay. जैसे मैंने कहा आपने इतने सारे एग्जाम क्लियर किए हैं मतलब किस किस का एक्सपीरियंस पूछूं आई एम आल्सो लाइक लिटिल बिट कंफ्यूज बट एनीवेज आपने काफी सारे एग्जाम क्लियर किए हैं वी विल आल्सो ट्राई दैट इफ लाइक देयर विल बी एनी पॉसिबिलिटी वी कैन कंडक्ट अ वेरी स्पेशल सेशन स्पेसिफिक टू अ पर्टिकुलर एग्जाम सो दैट मैक्सिमम स्टूडेंट कैन गेट अ बेनिफिट फ्रॉम दैट आज का आखिरी सवाल है कि कोई ऐसा यूनिक पॉइंट जो कि आपको लगता है कि आपके पूरे जर्नी में उसने मदद की और आपको इस सक्सेस पॉइंट तक लाकर खड़ा कर दिया एनीथिंग जो कि आपको लगता है आपके प्रिपरेशन में प्लस पॉइंट की तरह काम किया
Yes. Actually, the support I got from my family was very special for me because MSc हो गया है, उसके बाद कोविड है, कब एग्जाम होगा कुछ भी मालूम नहीं होगा, भी वो उसमें भी क्वालिफाई होगा या उसमें भी पता नहीं. And last year, ma'am, you know that I got selected for BARC Ph.D. in last year only. But since I was not having any qualifications like NET, LS or JRF, I did not join that institute. So उसका भी डर था कि मैंने उतना अच्छा इंस्टीट्यूट तो छोड़ दिया, क्या आगे जाके मैं क्वालिफाई कर पाऊंगी. So my mother always supported me very much. उन्होंने कहा कि जो होगा, अगर इस बार भी नहीं निकला तुम नेक्स्ट टाइम ट्राई करना. तो दैट से एक्चुअली बूस्टेड मी दैट ठीक है, कोई तो मेरा साथ है कि चाहे जो भी हो, इफ आई फेल ऑल्सो, then my family is there who will always support me for this journey. Okay, so any special message you want to give to your friends जो कि आपको देख रहे हैं? Yes, actually when you have started preparation for CSIR-NET, so you are interested to know more about the research. So if you can dream CSIR-NET, then you can always do it. So feel confident, whatever you're doing it right, and that will practice more questions, and more the correct number of questions, more the confidence, and that will lead to your success towards your goal. Okay, that's a great thing. Okay, thank you so much Proma for joining us. आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा. इनफैक्ट आपने इतने सारे एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं. जैसे मैंने कहा, we will try to highlight some of the main point of different exams so that maximum student को help मिल सके. Thank you so much हमें ज्वाइन करने के लिए, अपना इतना कीमती वक्त. Thank you, ma'am. Okay, Proma. Thank you, ma'am. Okay, and all the very Okay, best. ma'am. Bye. Bye bye. Thank you, ma'am. Yes, ma'am.